Hi girls and boys, here I am making another video on color therapy as taught by Dr. Baswaraj K. This is basically on Ayurveda color therapy. These alternative therapies, they are existing since long time, maybe not even when allopathic medicine and those things were discovered. People were all into healing and science, it's a science of energy healing basically. So what is vibrational medicine? There are different ways of treating people with different vibrations. You can even say homeopathic remedies, acupuncture, acupressure, energy healing, back flower remedies, gems and crystals, color therapy, sound healing, magnetic healing, radionics. There are so many. And there are some Western medical techniques also that fall into vibrational medicines like X-ray, CAT scanning, MRI, then electrotherapy, pulse magnetic stimulation, heart pacemaker, magnets for different kinds of problems, facial paralysis, optical nerve atrophy. There are so many others. The science of energy healing is mostly found in the rural areas where they have very less medical facilities and they are living without drugs most of the time. So those rural areas, they don't have doctors. So what do? They have the traditional way of treating people. They go to the healers they have different names, as they may call them Swami, Baba, and they do get healed. Why? How? This is only by doing some energy healing. They do it on people and they do get relieved. But then, as of now, there are different therapists who have discovered some ways and for treatment for people who are even not in the rural areas, even in the cities and bigger places. Why? Because people don't want to go for medical allopathic treatment now, because there is no permanent cure. But yes, in these, when you adopt these methods of treatment, you don't have any side effect, you can call it. But yes, you can be cured also most of the time. So let's learn how this color therapy can help us. There are different methods of stimulation. You can stimulate the energy points on your body by either putting needles, putting seeds, putting magnets, then putting pressure with your fingers. You can use light, you can use color. What does stimulation do? Stimulation means you are trying to stimulate something by poking, by using your finger, by putting a needle. So you are stimulating that point. The nerve cells below the skin where it is activated get stimulated. Then how the color works in case of stimulation. Every color has a different energy associated with it. Colors affect the bodily functions, mind and emotions with the energy produced by light. Studies conducted have demonstrated the benefits of colors where the development of brain, creativity, productivity and learning are concerned. There was a European doctor Ponza who conducted various experiments in 1875 by using a colored glass, walls and furniture in various rooms. The colors Ponza used were red and blue. A man refusing to eat for days started desiring food. An aggressive patient put in a blue room calmed down in a period of 1 hour. One of the most important studies is related to the Parkinson's patients. While the color red caused a deterioration in the pathological problem observed in Parkinson's patients, green led to improvements. Brain damaged patients also reacted negatively to the red color. The hypothalamus is a key part of the brain responsible for the secretion of a number of hormones which control many aspects of the body's self-regulation, including temperature, sleep, hunger, and exposure to light in the morning, that's blue, green light in particular, prompts the release of hormone cortisol, which stimulates and wakes us, and inhibits the release of melatonin. In the late evening, as the amount of blue light in sunlight is reduced, melatonin is released into the bloodstream and we become drowsy. Thus, we can see that the colors, they are stimulating our brain in different ways.
You might have heard about this word chi, that means energy. So, energy can be derived either from congenital form, it can be congenital ki, that is, that we have got it in the form of DNA from our parents, it is there in our DNA. So, we have taken it from our forefathers and parents, that is called congenital ki. Then we have food chi, that is transformed by spleen and stomach. So, whatever food we eat, we get some energy out of it, that is called food chi. Then we get the energy from the air, fresh air, environment. So, that is fresh air chi, which we get from the nature. We do happen to fall sick often. The reason can be because of excess of energy in our body, or energy is deficient, or there is some stagnation of energy, और देर इज़ सम एनर्जी कॉन्ट्रावेक्शन. हमारी बॉडी में कभी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है. जैसे हीट है, हमने कुछ बहुत ज़्यादा गर्म खा लिया है तो हमारी बॉडी में एक्सेस एनर्जी हो गई है, या हमने खाना अच्छे से खाया ही नहीं है तो हमारे अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई, हमारे अंदर एनर्जी कम हो गई, हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे. यहाँ पर कभी कभी एनर्जी स्टैगनेंट हो गई है, वो एक जगह पे जाके अटक गया है और वो ना हिल रहा है, आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो वो एक स्टैगनेशन पॉइंट आ जाता है. हो सकता है कहीं पर एक जगह पे बॉयल हो गया क्योंकि वहाँ पर वो एनर्जी स्टैगनेंट हो गई है तो वो हील नहीं हो रहा है. फिर कॉन्ट्रावेक्शन, क्या हमने नेचर में हमने कोई नेचर के रूल है, कोई हमारे को जैसे करना चाहिए वो हमने किया नहीं है, हमने उसके अगेंस्ट जाके कुछ किया है जो कि नहीं करना चाहिए. अगर जैसे कहते हैं कि हमें दही रात को नहीं खाना चाहिए पर वो ठंडा होता है, हमने रात को फ्रूट्स और दही कोई भी ऐसी चीज़ खाई जो ठंडी है तो हो सकता है हमें ज़ुकाम हो गया. सो हम नेचर के अगर अगेंस्ट जाके कुछ करें तो भी हमें प्रॉब्लम होती है. सो ये सारे इशू होने से हमें बीमारी हो सकती है. Chi is the energy flow created along the pathways that connect the acupuncture point on the body. The pathways between the points are called meridians, which also connect the internal organs in the body. Actually, जैसे हम एक सड़क पे चल रहे हैं तो हम कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वो एक पाथवे है जहाँ से हम जा रहे हैं. वैसे ही हमारी जो एनर्जी है वो भी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और वो जो रास्ता है जहाँ से वो जाती है उसको मेरिडियंस बोलते हैं. Let's talk about Ayurvedic energies. These are energies which are physical, and then which are metaphysical. They are 10 in number. So physical energies are Akash, Vayu, Agni, Jal, Prithvi. और metaphysical है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वैसे वाली, जैसे कि काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये सारी हमारी मेटाफिजिकल है. लेकिन जो आयुर्वेदिक एनर्जीज़ हैं जिनके बारे में हम करने वाले हैं डिस्कस, वो सारी इन पे डिपेंडेंट है. नाउ विल टॉक अबाउट पंचभूता. ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स. दीज आर नोन एज पंचभूता. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. सारी चीज़ें, ये दुनिया सारी 5 धातुओं से बनी है. आकाश, वायु, तेजो, आपो, पृथ्वी. So we have got 5 elements in us. Akash is related to ether, Vayu to air, Teju to fire, Apo to water, and Prithvi to earth. Panchabhuta. All matter in the universe is comprised of 5 elements. These are known as Panchabhuta. पंच मतलब हमारा जो शरीर भी है वो भी सारा 5 एलिमेंट्स से बना है. ये सारी सृष्टि जो है वो 5 एलिमेंट्स के साथ बनी है, जो है आकाश, वायु, तेजो, आपो, पृथ्वी. आकाश मीन्स ईथर, पूरी हवा जो आकाश है, हमारे आसपास जो पूरा ब्रह्मांड है आकाश है. वायु इज़ एयर, तेजो इज़ फायर, अग्नि, अपो इज़ वाटर, पृथ्वी इज़ अर्थ. सो ये सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं इसके साथ हमारी ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि बनी है. दिस आकाश और ईथर, इट इज़ रिलेटेड टू द सेंसरी ऑर्गन ईयर, कान के साथ रिलेटेड है. सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ऑडिटरी सेंसेशंस ऑफ साउंड, जैसे हम सुनते हैं, क्योंकि वो सारा जो है वो हमारा आकाश से रिलेटेड है, उसका सेंसरी ऑर्गन ईयर है. वायु, एयर, सेंसेशन ऑफ टच बेसिकली, और ये स्किन के साथ रिलेटेड है. स्पर्श, हमें पता चलता है कि कैसे कौन हमें, क्योंकि जब हवा आती है तो हमारी स्किन को जब टच करती है तो हमें एक फीलिंग आती है. वो हवा जो है, एयर है, वो स्किन के साथ रिलेटेड है, उसका सेंसरी ऑर्गन स्किन है.
फिर फायर, तेज फायर मतलब जब हमारी आँखों से तेज निकलता है, ऐसे आप उसको याद कर सकते हो। विजुअल इम्प्यूट ऑफ कलर, सो इसकी सेंसरी ऑर्गन जो है वो आइज़ है। फिर अपो वाटर, दैट इज़ लाइक टेस्ट सेंसेशन। टंग, जब हम पानी पीते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है, टंग से हमें पता चलता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और वो एक सेंसरी ऑर्गन जो वाटर का है वो टंग है। फिर अर्थ, पृथ्वी। स्मेल, अब जैसे बहुत बारिश हो जाने के बाद एक आपको खुशबू आती है धरती से, सो अर्थ इज़ रिलेटेड टू सेंसरी ऑर्गन नोज़। सो उसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो नोज़ है। सेंसेशन ऑफ स्मेल और अडर, मतलब खुशबू की या कोई गंदी स्मेल भी आ रही है या अच्छी स्मेल आ रही है, तो वो सब अर्थ से रिलेटेड है। ईथर हमारे कान से, ऑडिटरी सेंसेशन से, क्योंकि जब हवा चलती है, ईथर मतलब पूरा आकाश में, हमें कानों के साथ रिलेशन है उसका। एयर जो है वो स्किन के साथ है। फायर आइज़ के साथ है। वाटर टंग के साथ है। अर्थ हमारा नोज़ के साथ है। ये हमें याद करना है। नाउ कमिंग टू द क्रिएटिव साइकिल, so wood element provides the generating force of fire. Fire provides the generative force of earth. This relationship provides the foundation for understanding the five element theory, and consequently where imbalances may arise within the cycle. If earth, for example, is weakened from a poor diet and overwork, you will see that more nourishment is required from the fire element to nourish earth. Additionally, if earth is weakened, metal element may also be affected. You might have even seen that people develop digestive issues from irregular eating, excessive worry, and overwork, which leads to a proliferation of dampness, which then affects the metal element. Within this case, you may see a combination of bloating, gas, and poor energy with the development of metal, that is lung symptoms such as sinus or phlegm, etc. That's kind of an asthma happening in the body. ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? जैसे कि अगर हमारा अर्थ एलिमेंट अगर ख़राब हो जाता है क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, पुअर डाइट ले रहे हैं या काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे फायर एलिमेंट को काम करना पड़ता है उसको नरिश करने के लिए, अर्थ को। और अगर अर्थ हमारी वीक है उसके साथ साथ मेटल एलिमेंट भी इफ़ेक्ट होता है, तो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब कोई इरेगुलर खाना खा रहा है, एक्सेसिव वरी कर रहा है, ज़्यादा उसको टेंशन हो रहा है या ओवरवर्क कर रहा है, तो उसके कारण इट लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ डैम्पनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण मेटल एलिमेंट भी इफ़ेक्ट होता है, ये भी पहले बताया। तो इसमें क्या होएगा कि यू विल स्टार्ट हैविंग ब्लोटिंग, गैस, पुअर एनर्जी, ये सब बॉडी में आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ मेटल एलिमेंट डेवलप हो जाता है। दैट इज़ लंग सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे साइनस आएगा, फ्लम आएगा, अस्थमा आएगा, तो ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड। अगर आपका स्टमक में कुछ इशू हो रहा है उसके साथ साथ आपका लंग्स में भी इशू हो रहा है। So this cycle is very much helpful in providing a check and balance system among all the elements. Let's see an example of this relationship within the body. In case of anxiety, where fire is more, which is related to liver cheek stagnation, that is wood, where over time you begin to see more kidney related signs, water related signs, as water element attempts to control the overreactive fire. सो इसमें हमने देखा क्या होता है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, फायर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हो गया है, वैसा होने से क्या होएगा, यू विल सी वाटर रिलेटेड साइन कमिंग अप, क्योंकि अब किडनी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू वाटर, यू विल सी मोर ऑफ किडनी और वाटर रिलेटेड साइन, एज अ वाटर एलिमेंट जो है दैट अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द ओवर रिएक्टिव फायर. Nourish human being into a greater possibility, it is very important how the water, air, earth and fire and the fifth dimension, which is largest one, Akash, space, that behaves. Today modern science is recognizing there is something called as Akashic intelligence, that is empty space has certain intelligence. If you know how to get the cooperation of Akash into your life, this will be a blessed life. An intelligence that you have never thought possible will become yours, because an intelligence which is beyond your understanding and grasp is right now functioning right here within you. It is that intelligence which is holding the whole cosmos together. It is that intelligence where the womb, which is the womb for creation basically.
It is the womb of that intelligence that all creation is happening, and it's not denied to anyone. Access is not blocked. It is just that we have to look into it. We have to find the way out. So to get the cooperation of the Akash, there's a simple process you can do. That's after sunrise, before the sun crosses 30-degree angle from the horizon, look up at the sky once and bow down to it for holding you in place. And do it even in the evening. If you consciously do this 3 times a day, if you get cooperation from the Akash, life will happen in magical way. So these are the prime characteristics of Akash. It's most scattered, least dense, subtle. It has a covering, non-resistance, flexibility, space, permeability, permits everything and anything, and it absorbs. Why do we need space in our body? To start something, new space is required. We need space in the mind, because if you have to put anything anywhere, there should be some space. So it is very, very important to have space in the body, in the organs. Akash element basically represents any covering, be it skin, clothes, covering over organs, covering in personality. We cover ourselves and behave as someone different, playing different roles. Skin gives smoothness, elasticity, boundary, and keep things within the boundaries. Then organ coverings, that is also represented by Akash. All organs having covering inside and outside, like pericardium covers the heart, inner walls in all the organs. All these coverings are related to Akash. Lungs are covered by pleura, intestines by mucal membrane, joints by synovial membrane, and nerves connected by myelin sheet. So basically जितने भी हमारे organs हैं वो सारे जो covered हैं, they are covered by a sheet, and that is related to Akash. So it's Akash element, which is बिकॉज वो सारी हमें स्पेस चाहिए, और स्पेस कौन देता है? आकाश देता है. उन सब ऑर्गन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई जगह चाहिए. अगर ब्रेन है तो ब्रेन किसी चीज़ में ही फिट होगा, ऐसे तो खुला नहीं छोड़ा जा सकता. तो उसको कवर कौन करता है? वो आकाश. सो वी कैन सी दैट इफ़ आकाश लेयर इज़ वीक, विल गेट एलर्जीज. कवरिंग इज़ वीक, then we can't protect the organ. So very important to have good आकाश space. अगर वो अच्छा नहीं है तो अगर हमारी बाहर की कवरिंग में लीकेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे अंदर भी ऑर्गन सेफ़ नहीं है. इसलिए आकाश की लेयर अगर वीक है तो हमें एलर्जीज़ हो जाती हैं. इफ़ वी हैव इचीनेस इन द बॉडी, स्किन इश्यूज़ हैं या रैशेज़ हो रहे हैं, स्किन पील हो रही है, तो ये सारे जो है आकाश फायर जो है वो डिस्टर्ब्ड है. सिस्ट हैं स्किन पे, तो अर्थ और आकाश दोनों मिला के इसमें डिस्टर्बेंस है. अगर हमारे ड्राई स्किन है तो हमारा एयर और वायु दोनों डिस्टर्ब्ड है. स्किन रैशेस है तो आकाश और फायर दोनों डिस्टर्ब्ड है. सिस्ट है तो आकाश और पृथ्वी दोनों डिस्टर्ब्ड है. अगर स्किन ब्लैक हो रही है तो डैम्पनेस और आकाश, वाटर, अर्थ सारे डिस्टर्ब्ड हैं. अगर कुछ भी हमारे अर्थ एलिमेंट में जब एंटर करता है, अर्थ में एंटर करता है, तो एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है. Those people who are born on 1st of any month, so all these people have good Akash element. Mentally also they have very low resistance. And then if you use violet color in case of number 1, it will help. If you want to convince someone, just use violet color, and you can even put 1 and violet color on that and use it to convince somebody in some form. Then those people who are very stubborn, they have very low आकाश, they need space. बहुत ज़िद्दी हैं, उनकी जो स्पेस कम है, उनको और स्पेस चाहिए. Element आकाश represents the internal empty space within the covering. Any space represents आकाश. So there is space or pores on skins for toxins to go out, pores in intestines to absorb the nutrition. It is in the brain to absorb data and store in memory. Holes and cavities from cell level to organ level represent space. Holes, pores and space. Another important representation of Akash is pores or holes. Cavity holes, big holes like mouth, anal, reproductive holes, they all represent Akash. Why is it important? Because covering makes things attractive, helps to keep things safe within, protective, makes it beautiful, curious, hidden. So you have gift wraps
so which gives flexibility to carry it without problems, keep things safe, makes it look beautiful, and yet hiding within things. If a person has excess of akasha, then he'll have scattered thoughts, no concentration, no control on 9 holes in the body, bad breath, ear pain, hemorrhoids, then have extra growth in the nose. A person with lack of akasha will be very rigid. There will be no flexibility in his thought, his actions, very stubborn. Then lack of absorption. He won't be able to absorb nourishment properly. Flexibility in the joint, spine, muscle, momentum is lost with lack of akash. Lack of proper absorption leads to various deficiencies. This is because of lack of akash and space in pores to absorb. Then stiff neck is due to lack of flexibility and then person being stubborn. In relations also they'll have a problem, or relations have a joint associated with us in the body. So as we lose the relations and its lack of flexibility leads to various pains. They say if you have pains in the body, it's because of some relationship issues in your daily life. So if you have low back pain, it's because of financial problems. So if you have no flexibility reaching the brain, which can lead to multiple sclerosis. If heart loses flexibility, muscles become hard and pumping will be slower and will be painful, which can lead to heart attack. So it's important to maintain softness of the skin, or all the organs, tissues, muscles, etc. should be softened. Permeability lets skin to breathe in and out. So let's fluid in and out of the body. It's very important. Let's have the toxins out of the body and absorb nutritions.